Hello everyone, this is Abhishek Mahanti and you are watching Padat Begin. So students, welcome to another lecture of the chapter Electric Charge and Field. So previous lecture gudikare ame discuss kari sariche what is electric field, what is electric field intensity, the formula to calculate electric field intensity due to a point charge, then what is electric dipole moment, the electric field due to a dipole at its axial point, equatorial point and at any arbitrary point. तो आमे जिते इलेक्ट्रिक फील्ड विषय डिस्कस करथिले तो आमे कोन कहितले ना इलेक्ट्रिक फील्ड होची गोटे स्पेस अराउंड ए चार्ज बॉडी इनसाइड व्हिच its electrical forces can be experienced. So electric field can be produced by a point charge, it can be produced by a line charge, it can be produced by a plane charge sheet or different types of charge bodies. ଆଉ ସବୁ ଟାଇପର ଚାର୍ଜ ବଡିର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଡର ନେଚର ସେମ୍ ନୁହେଁ. They produce different type of electric field. So we must study the different behavior or different nature of electric field produced by different object. And we know that electric field is not visible to us. We cannot see electric field. But if you place a charged particle inside that electric field, the charged particle will experience force. So we use a test charge to determine whether electric field is present at that place or not. तो इलेक्ट्रिक फील्ड रो नेचर को स्टडी करबा पई आमे गोटे नुवा टर्म विषय आज पढिबा. सो आज रो टॉपिक रो नेम होची कोन ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. तो आज मैं डिस्कस करबा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बा लाइंस ऑफ फोर्स रो मीनिंग कोन and some of the important properties some of the important characteristics of these electric field lines. So let's begin. So students remember that ये जो electric field line बा lines of force रा concept first किए आनथिले the scientist Michael Faraday. ଆଉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स रो यूज कोन ना जेते बेले आमे जेकोनसी गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करूचे तार नेचर को स्टडी करूचे तो से नेचर को स्टडी करिबारे हमको हेल्प करिवो किए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. जेमती अर्थ उपरे जेकोनसी गोटे प्लेस रो लोकेशन को आमे केमती माने डिटरमाइन करूचे by using the concept of longitude and latitude. So longitude and latitude these are imaginary drawn lines on the surface of earth. आमे तरे globe use करूचे से globe रे longitude अछि and latitude अछि and those curves are imaginary drawn curve. अर्थ रो सरफेस रे केबे भी लॉन्गिट्यूड किबा लैटिट्यूड न थाए. सो आमे जेकोनसी गोटे पर्टिकुलर प्लेस रो लोकेशन को आमे डिटरमाइन करिया पई आमे गोटे इमेजिनरी कांसेप्ट यूज करूचे ताको आमे कहूचे लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड. ठीक सेमती इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करिया पई आमे गोटे इमेजिनरी कर्व विषय डिस्कस करिबा ताको आमे चूज करिबा ताको आमे कहूचे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. तो एबे बुझिबा जे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रो एक्चुअल मीनिंग कोन तार डेफिनेशन कोन. तो जेमते में कहिले जे जदी गोटे पर्टिकुलर रीजन रे इलेक्ट्रिक फील्ड अछि आमे जानिबा केमती ना इफ यू टेक ए टेस्ट चार्ज एंड यू प्लेस द टेस्ट चार्ज इन दैट रीजन, if the test charge experiences electric force it means electric field is present there. काहे कि ना गोटे चार्ज पार्टिकल ही इलेक्ट्रिक फील्ड को रेस्पोंड करिवो. ठीक अछि, you cannot see electric field but if you place a charge particle inside the electric field that charge particle will experience force. तो जदि गोटे चार्ज पार्टिकल ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स पडुची त माने से रीजन रे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट अछि आउ जदि गोटे रीजन रे चार्ज पार्टिकल ऊपर किछि भी फोर्स पडुनी त माने से रीजन रे इलेक्ट्रिक फील्ड नाही. तो एबे में देखिबा जे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. तो एठी लिखा जी कोन ना एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स मे बी डिफाइंड एज द कर्व along which a small positive charge बा हम कहि परिबी टेस्ट चार्ज because we know that test charge is always positive and its magnitude is very negligible as compared to the magnitude of source charge. The कौन लिखला है ना an electric line of force may be defined as the curve along which a small positive charge but a test charge would tend to move when free to do so in an electric field. Suppose imagine करो एटा हो गोटे स्पेस एमती गोटे स्पेस अछि बड़े रीजन अछि आ ए रीजन रे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट अछि. तो मुबे कोन करिवि
ए रीजन रे जेकोसी गोटे पॉइंट चूज करी आउ से पॉइंट रे मु कौन करी आई विल प्लेस ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज बा ए टेस्ट चार्ज तो एबे ए टेस्ट चार्ज ऊपर किसी फोर्स पड़िबो काहे जेहेतु से रीजन रे इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छी तो से से चार्ज ऊपर किसी इलेक्ट्रिक फोर्स पड़िबो आ जदि से चार्ज टा फ्री थिबो टू मूव ताहले कोन हबो से चार्ज टा कोन हबो ड्यू टू द फोर्स इट विल बी एक्सेलरेटेड एंड व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड से गोटे पर्टिकुलर पाथ रे ट्रैवल करिवो तो सी जो पाथ रे ट्रैवल करिवो आमे जदि से पाथ को ड्रॉ करि परिबा इमेजिन करि परिबा then that curve the charge particle may move in a straight line or it may move in a curve path तो जो भी पाथ से ट्रैवल करिवो सही पाथ को हमें कहिबा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स त माने हमें या कहि परिबा जे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होची कोन ना गोटे कर्व along which a charge particle will be accelerated but it will tend to move inside the electric field if it is free to do so जदि से चार्ज पार्टिकल को रेस्ट रे छाड़ दबा एंड इट इज फ्री टू ट्रैवल इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड तो से जो पाथ रे ट्रैवल करिवो बा तार ट्राजेक्टोरी जहाँ हबो सेटा को हमें कहिबा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो केवल ए डेफिनेशन पढ़ले आमे सब जिनस बुझी पारिबानी तो आमको जानिबार अछि जे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रो केतरा प्रॉपर्टी अछि ताकू जदि वंस पढ़ी देबा देन आमर गोटे कंप्लीट आइडिया आसी जिवो अबाउट दिस इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स सो एठी देखो बहुत गुटे प्रॉपर्टी लिखाई छी तो आमे सब प्रॉपर्टी को वन बाय वन डिस्कस करबा तो फर्स्ट प्रॉपर्टी कोन देछि ना the lines of force are continuous smooth curves without any breaks तो ये फर्स्ट पॉइंट रो मीनिंग कोन आमे कहले जे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स रो यूज कोन ना टू स्टडी द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो जदि गोटे रीजन रे इलेक्ट्रिक फील्ड अछि तो आमे से रीजन रे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्रॉ करि परिबा एंड दैट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज ए स्मूथ कर्व एंड कंटीन्यूअस कर्व रो मीनिंग कोन ना जदि गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड भितरे आमे गोटे चार्ज पार्टिकल को प्लेस करिबा द चार्ज पार्टिकल विल एक्सपीरियंस ए कंटीन्यूअस फोर्स जेहेतु से चार्ज पार्टिकल गोटे कंटीन्यूअस फोर्स एक्सपीरियंस करिवो सो इट विल बी कंटीन्यूअसली एक्सेलरेटेड and it will continuously move inside the electric field. That's why the electric field line is a continuous curve. There cannot be any break. ता माने suppose electric lines of force एमि थिबो तापर गोटे ब्रेक आसीबो एमति हे जिवो एटा केबे पॉसिबल नै electric field line must be a continuous curve like this. It cannot have any kind of break because जदि electric field गोटे region रे अछि then a charged particle will experience continuous force inside the electric field. That's why the lines of force are always continuous and smooth curve without any breaks. Now let us go to the next point, next property. Now the lines of force they always start at positive charges and end at negative charges. So they cannot form closed loops. If there is a single charge, then the lines of force will start or end at infinity. तो एबे देखिबा ए जो सेकंड पॉइंट रो मीनिंग कोन तो देखो आमे एबे जो डिस्कस कले जे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स रो मीनिंग कोन ना एटा होची गोटे ट्राजेक्टोरी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ता माने जदि आमे गोटे चार्ज पार्टिकल को रेस्ट रे छाड़ देबा बा ताको मे फ्री कर देबा टू मूव इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से जो पाथ रे ट्रैवल करिवो दैट पाथ will represent the electric field line. So second point कौन कहूची ना the electric field lines by electric lines of force they always start at positive charges and end at negative charges. तो आर मीनिंग कौन देखो suppose आम पाखरे गोटे सिंगल पॉजिटिव चार्ज अछि ठीक अछि and we are interested in drawing the electric field line due to this single positive charge. तो एबे ए जो सिंगल पॉजिटिव चार्ज अछि ता चारि पटे गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड थिबो तो एबे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करिबा केमती ड्रॉ करिबा लेट अस ब्रिंग ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज बा लेट अस से ए टेस्ट चार्ज तो देखो एटा होची गोटे टेस्ट चार्ज ताको हम ए रखि देली q नॉट इज द टेस्ट चार्ज तो जते बडी मो q नॉट को रखिली एट दिस पॉइंट दिस q नॉट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड द सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव इन दिस एग्जांपल तो एबे कोन हबो ए जो सोर्स चार्ज अछि दिस सोर्स चार्ज विल रिपेल द टेस्ट चार्ज
और जो रिपल्सिव फोर्स पड़ो दैट रिपल्सिव फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो एबे कौन हम एबे जो चार्ज पार्टिकल अच्छी से कुआडे मूव करिवो along this direction। तो आम एमती गोटे एरो मार्क देदेले। सो दिस एरो मार्क रिप्रेजेंट्स वन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक अच्छे। सिमिलरली you can place the test charge at this point। So if you place the test charge at this point, then it will experience a repulsive force in this direction, so it will continue to move in this direction, it will go away from the positive charge। ठीक अच्छे। Similarly you can draw infinite number of इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ना। तो आम एमती बहुत गुड़े इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एमती आम ड्र कर। ठीक अच्छे। वी कैन ड्र मेनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स फ्रॉम दिस पॉइंट चार्ज। ओके। तब देखो एबे आमे जो फिगरटा ड्र कले ये जो एरो मार्क अच्छे द एरो मार्क इज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। तो आम यह कहीपर जे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो स्टार्ट है कौट स्टार्ट है फ्रॉम दिस पॉजिटिव चार्ज बॉडी। ठीक अच्छे। तो एबे जेहेतु केवल गोटे सिंगल पॉजिटिव चार्ज अच्छी तो ये जो लाइन जो जाइए वर्तमान जो आम एरो मार्क देचे से कौटी एंड हम इट विल एंड एट इनफिनिटी। ठीक अच्छे। तो जदि गोटे सिंगल चार्ज थी एंड इट इज ए पॉजिटिव चार्ज इन केस ऑफ ए सिंगल पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट कौटी हम स्टार्ट हम फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज और एंड कौटी हम एंड हम एट इनफिनिटी बिकॉज दिस लाइन विल गो टू इनफिनिटी। Now let us discuss about the electric field line due to a single negative charge। जदि गोटे सिंगल नेगेटिव चार्ज अच्छी लाइक दिस एटा होचे गोटे सिंगल नेगेटिव चार्ज। तो सिंगल नेगेटिव चार्ज पाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स केमती आसीबो। सपोज यू प्लेस ए टेस्ट चार्ज Q0 here। The test charge Q0 is always positive। तो एबे कोन हबो ना दिस टेस्ट चार्ज Q0 will experience an attractive electric force towards the negative charge। तो एबे कोन हबो दिस टेस्ट चार्ज will accelerate towards the negative charge। तो देखो एबे जो एरो मार्क दिया हिची the arrow mark is towards negative charge, but in the first case in case of a single positive charge the arrow mark was away from the positive charge। Simply if you place the test charge here then it will experience force towards the negative charge in this direction। Similarly you can draw electric field lines like this and you can see that the arrow mark is always towards the negative charge। Okay, the arrow mark is always towards the negative charge। ठीक अच्छे। तो इसे में कौन सिखले ना एबे ए जो एरो मार्क देचे एटा एंड कोठी होची एंड होची नेगेटिव चार्ज रे। तो मुझे पचारिबे जे ए जो एरो मार्क ए जो आमे लाइन ड्रा करछि से लाइन रो स्टार्टिंग पॉइंट कोटा माने को पॉइंट से स्टार्ट हिची। तो आमे एबे आर स्टार्टिंग पॉइंट को एमती किछि लोकेट करि परिबा नाही। तो आमे कहि परिबा जे दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम इनफिनिटी। ठीक अछि। तो जदि गोटे सिंगल पॉजिटिव चार्ज थिबो ताले कोन हबो ना स्टार्ट हबो पॉजिटिव चार्ज रु एंड हबो इनफिनिटी रे। जदि गोटे सिंगल नेगेटिव चार्ज थिबो तो स्टार्ट हबो इनफिनिटी रु और एंड कोठी हबो एंड हबो नेगेटिव चार्ज ऊपर। तो हम जो सेकंड जो पॉइंट प्रॉपर्टी पढ़ले कौन ना जदि गोटे सिंगल चार्ज थिबो इन केस ऑफ सिंगल चार्ज the lines of force will start or end at infinity। Now go back to the first segment कौन लिखा है ना the lines of force start at positive charge and end at negative charge। तो जदि गोटे माने सिस्टम ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज थिबो गोटे प्लस चार्ज अछि आ गोटे माइनस चार्ज अछि। तो से केस रे कोन हबो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स टा पॉजिटिव रु स्टार्ट हे कि नेगेटिव एंड हबो। ठीक अछि। लाइक दिस इट विल स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। It will never start from negative and end on positive। आमे केबे भी देखिबानी जे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टा नेगेटिव रु स्टार्ट हे कि पॉजिटिव रे एंड हे जी। ऑलवेज कोन हुए ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टा पॉजिटिव रु स्टार्ट हे कि नेगेटिव रे एंड हुए। इज दैट क्लियर? एंड दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। क्लोज्ड लूप माने कोन जदि मु एमती गोटे लूप ड्रा कली आको मैं कहिबा क्लोज्ड लूप। ता माने एमती एरो मार्क जीवो एटा एपटे ऑपोजिट हे जीवो एरो मार्क टा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन केबे भी एमती टाइप रो क्लोज लूप फॉर्म करि परिबो नाही। काहेकि फॉर्म करि परिबो नाही सपोज इमेजिन करो एठी अछि पॉजिटिव चार्ज एठी अछि नेगेटिव चार्ज। तो हमें कोन पडिचे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टा स्टार्ट हबो कोठू फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड कोठी हबो एट नेगेटिव चार्ज। तो एटा होउची इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। किंतु जदि सेटा गोटे क्लोज लूप फॉर्म कला तो देखो एठी हम जो तळे जो हमें जो ड्रा करचे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टा तार एरो मार्क कोड अछि फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव
दिस इज नॉट पॉसिबल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन केस रे एटा केबे पॉसिबल हबो नाही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नेवर स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड सॉरी कैन नेवर स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव एंड एंड ऑन पॉजिटिव तो एटा भूल सो रिमेंबर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नेवर फॉर्म क्लोज लूप नेक्स्ट पॉइंट कर दीजिए थी नेक्स्ट प्रॉपर्टी द टेंजेंट टू द लाइन ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स रो आउ गोटे इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी कौन से कहूँ जदि आम पाखे गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अच्छी सपोज आई विल ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लाइक दिस एमती गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अच्छी तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रो आउ गोटे यूजफुलनेस कौन ना सपोज मु ए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उपरे गोटे पॉइंट चूज करी तो आम पचारि जे यही पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन कुआडे सपोज एमती यार मार्क अच्छी ठीक अच्छे दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एमती कर्व ड्रॉ कराई एंड गोटे पॉइंट चूज कली आम पचारि जे से पर्टिकुलर पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रो डायरेक्शन कुआडे अच्छी आम केमती बाहर करबा ना सिंपल जिंस वी विल ड्रॉ ए टेंजेंट गोटे टेंजेंट ड्रॉ कर देबा ठीक अच्छे तो से टेंजेंट टा जुआडे शो करिवो दैट टेंजेंट विल रिप्रेजेंट the direction of electric field intensity at that point सेमती जदि मो एठी गोटे पॉइंट चूज करछि जे पचारि जे एई पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रो डायरेक्शन कोड हबो अगेन यू ड्रॉ ए टेंजेंट लाइक दिस सो मन रखो ए जो पॉइंट लिखा है कोन ना द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट एंड थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ला परे आमे बे फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़िबा व्हिच आर इंटरलिंक्ड फोर्थ प्रॉपर्टी कौन देछि no two lines of force बा no two electric field lines can cross बा intersect each other कहे कि if they intersect then there will be two tangents at the point of intersection and hence two directions of electric field at the same point which is not possible तो सी कौन कहूँ फोर्थ पॉइंट जे दुईटा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स केबे भी से माने परस्पर को क्रॉस करिवेनी बा इंटरसेक्ट करिवे नाही कारण कौन सपोज आम गोटे डायग्राम ड्रॉ करवा सपोज यहाँ हूँ गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड दिस इज अनदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एमती दुईटा में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कले तो फोर्थ प्रॉपर्टी कहूँ कौन ना टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नेवर इंटरसेक्ट इच अदर तार कारण कौन जदि से माने इंटरसेक्ट कले ताले प्रॉब्लम कौन हम देख इफ दे इंटरसेक्ट देन वी विल गेट ए कॉमन पॉइंट वी गेट ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आम ये जो कॉमन पॉइंट पाइले ए कॉमन पॉइंट रे आमे दुईटा टेंजेंट ड्रॉ करि परिबा टू द टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एमती गोटे टेंजेंट ड्रॉ करि परिबी एंड अनदर टेंजेंट कैन बी ड्रॉन लाइक दिस ठीक अछि तो जेहेतु मो पाखरे दुईटा कर्व अछि तो मु दुईटा कर्व को दुईटा टेंजेंट ड्रॉ करि परिबी एट द सेम पॉइंट वेयर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो एबे कोन हबो ना जेहेतु मो पाखरे दुईटा टेंजेंट पाई गली टेंजेंट कौन शो करे टेंजेंट शो करे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आम जो प्रीवियस पॉइंट रे पढ़थिले द टेंजेंट टू ए लाइन ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट तो वर्तमान मो पाखरे अछि दुटा टेंजेंट ता माने देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए सिंगल पॉइंट दिस इज नॉट पॉसिबल गोटे पर्टिकुलर पॉइंट रे वी कैन हैव ए यूनिक डायरेक्शन बट ए सिंगल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी but here we are getting two directions this is not possible at all that's why two electric field lines can never intersect each other ठीक अछि so this is your fourth point ଆଉ ए जो पॉइंट ता एग्जाम रे तार क्वेश्चन आसे वन मार्क क्वेश्चन आसीबो जे two electric field lines can never intersect each other explain so this is the explanation लिखा अछि तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी कोन देछि नंबर 5 the lines of force are always normal to the surface of a conductor on which the charges are in equilibrium एटा भी गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट आ एई पॉइंट भी क्वेश्चन आसे तो ए पॉइंट कोन देछि ना द लाइन्स ऑफ फोर्स आर ऑलवेज नॉर्मल बा ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर ऑन व्हिच द चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम तार मीनिंग कोन देखो सपोज हम पाखरे गोटे एमती कंडक्टिंग सरफेस अछि and on this conducting surface the charges are in equilibrium suppose we have charges the charges are in equilibrium on this conducting body the electric field line will be normal but perpendicular
to this surface, it will be like this. The electric field line must be normal বা perpendicular to the surface. କାହିଁକି ତ reason କ'ଣ? तो again आम देखा जदि नॉर्मल न हो कि जदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टा गोटे इनक्लाइन एंगल रहिबो लाइक दिस, ठीक अछि. सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टा नॉर्मल न हो कि एमती कोन गोटे इनक्लाइन हिक अछि, ताहले कोन प्रॉब्लम हबो? जदि इलेक्ट्रिक फील्ड एमती इनक्लाइन हिक अछि ता माने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज एक्टिंग along this direction. So if you resolve it, suppose आमे इज एंगल पाइले, the angle made by the electric field intensity with the conductor surface is theta, ठीक अछि. तो जदि आमे एबे इलेक्ट्रिक फील्ड को आमे रिजॉल्व करिबा, आमे पाइ जिबा E cos theta component, E cos theta component along the surface and E sin theta component, E sin theta component perpendicular to the surface. अच्छा, तो ये जो E cos theta component आसिला तार डायरेक्शन कुआडे अछि? along the surface बा tangential to the surface. तो अबे कोन हबो? ए इलेक्ट्रिक फील्ड रो कंपोनेंट पाई ड्यू टू द कंपोनेंट E cos theta the charge particle will experience force. काहेकि आमे जानिचे जे गोटे चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड पाई फोर्स एक्सपीरियंस करे. आ जेहेतु along the surface of conductor गोटे कंपोनेंट अछि E cos theta, तो ए E cos theta पाई गोटे फोर्स पड़िबो, से फोर्स केते हे जिवो Q into इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इट इज E cos theta. तो एबे ए जो फोर्स पड़िबो, then the charge particle will be accelerated. This charge particle will be accelerated. But आमे कौन लिखिचे एठी ना the charges are in equilibrium. The charges are in equilibrium. Equilibrium पर meaning कौन? The net force should be zero. There should be no force on the charge. There should be no net force on the charge particle. तो आमे लिखिचे जे कौन? The charges are in equilibrium. But एठी में कौन शो करचे? The charges are experiencing forces. So these two statements are contradicting each other. तो एटा केते बळे ठीक हबो? जदि आमे कहिबा जे कोन ना along the surface there is no electric field. जदि E cos theta को आमे जीरो कर देबा, जदि आमे E cos theta को जीरो कर देबा, ता माने सरफेस ऊपर किछि भी इलेक्ट्रिक फील्ड नाही, माने tangential to the surface किछि भी इलेक्ट्रिक फील्ड नाही, and that's why the charges will not experience any kind of electrical forces and hence they will be in equilibrium. तो जदि आमे E cos theta को जीरो कर देबा, ता माने cos theta हे जिवो 0. यदि cos theta हे जिवो 0, तो थीटा केते हो? थीटा हे जिवो 90 डिग्री. और थीटा रे मीनिंग कोन? द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. ता माने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टा एमती इंक्लाइन न हे कि किंदा आसीबो, इट विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ठीक अछि. सो there will be no component of electric field along the surface and the charges will be in equilibrium. So this is the fifth property of electric field lines. So ये सब property गोटे गोटे short question दे आसी एग्जाम रे. So try to understand and remember all these properties. Number 6 point कौन दीजिए? The lines of force have a tendency to contract lengthwise. This explains the attraction between two unlike charges. तो देखो आमे टिके पछक फेरी जिबा. आमे एठी जो फिगर ड्रा करतले, जदि गोटे सिंगल पॉजिटिव चार्ज अछि तो कौन हबो? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टा स्टार्ट हबो से पॉजिटिव चार्ज रो and it will go to infinity, ठीक अछि. And similarly, if we have a single negative charge, look at this diagram. If we have a single negative charge, then the electric field lines will start from infinity and they will end at the negative charge. ता माने सिंगल चार्ज से कोन होची ना चार्ज पार्टिकल टा कोन इन्फिनिटी रु आइदर बाहरुची नले इन्फिनिटी रे एंड होची, ठीक अछि. ता माने द लेंथ इज इनफाइनाइट. किंतु जदि आमे गोटे पॉजिटिव चार्ज आ गोटे नेगेटिव चार्ज नै जिबा, ता माने इफ वी टेक टू unlike charges, we take a positive charge and a negative charge. तो एबे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन केमती हेबो? एबे देखो, सपोज हम पाखरे गोटे टेस्ट चार्ज अछि Q0. तो एबे जो टेस्ट चार्ज दुईटा फोर्स एक्सपीरियंस करिवो. गोटे फोर्स कहा पई? फॉर द ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज and the second force is due to negative charge. So this positive charge will obviously repel the test charge because test charge is always positive. So the test charge will be repelled by positive charge and attracted by the negative charge. तबे कौन हबो? That test charge will travel away from positive charge but towards negative charge. तो सेमती गोटे कर्व पाथ रे ट्रैवल करिवो आसी इट पहुंचबो. तो एबे में कौन देखले?
ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ सिंगल चार्ज थिला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनटा कोटे आसला टू इनफिनिटी बट एबे कोन होची इनफिनिटी को न जायकी कोन से कॉन्ट्रैक्ट हो जाउची तार लेंथ कमी जाउची एंड से पॉजिटिव रू स्टार्ट होकर नेगेटिव रे एंड होगला ठीक अछि एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द टू अनलाइक चार्ज पार्टिकल्स ये पॉजिटिव अच्छी नेगेटिव अच्छी तंक भितर अट्रैक्टिव फोर्स अच्छी एंड दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स they contract okay it starts from positive charge body and end on negative charge body ठीक है so this explains the sixth property now we'll go to the next one the lines of force have a tendency to expand laterally so as to exert a lateral pressure on neighboring lines of force and this explains repulsion between two similar charges तो एबे में डिस्कस कले अबाउट टू अनलाइक चार्जेस बा टू डिसिमिलर चार्जेस एबे देखिबा इफ वी हैव टू सिमिलर चार्जेस ता माने इला गोटे पॉजिटिव चार्ज इबिला गोटे पॉजिटिव चार्ज वी हैव टू सिमिलर चार्जेस तो सेही केस रे कोन हबो जदि में एठी गोटे टेस्ट चार्ज q नॉट रखिबा देन द टेस्ट चार्ज q नॉट विल बी रिपेल्ड बाय बोथ द चार्ज पार्टिकल्स ठीक अछि q1 रिपेल करिवो q नॉट को q2 भी रिपेल करिवो q नॉट को तबे कौन हम दिस क्यू नॉट विल गो अवे फ्रॉम बोथ द चार्जेस तो से केस रे आमे जदी तार पाथ ड्रॉ करिबा तो पाथ केमती आसीबो दुईटा जदी लाइक चार्ज अछि तो पाथ केमती हेबो देखो एठी कोन होतला ना ए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनटा पॉजिटिव रो स्टार्ट हेके नेगेटिव रे एंड होतला बट एठी कोन हबो आउ एंड हेई परिबोनी केना बोथ आर पॉजिटिव तो एबे कोन हबो ना सेमान के भितरे रिपल्सिव फोर्स आसी जिवो बा मैं कहि परिबा दे विल एक्सर्ट ए लैटरल प्रेशर ऑन ईच अदर तो से दूर पड़े एमती आसुवे एमती आउ ये पड़े ठीक अच्छे एंड जेहेतु मैं दुटा पॉजिटिव चार्ज नहीं तो जो एरो मार्क दबा द एरो मार्क विल बी आउटवर्ड ठीक अच्छे सो देख ये आम ये जो फिगर ड्र कले ये कौन देखुचे ना द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दे कैन एक्सर्ट लैटरल प्रेशर ऑन ईच अदर and this explains the repulsive nature of force between two similar charges ठीक अच्छे तो जब पचरा जीवो जे ड्रॉ करिया को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू सिमिलर चार्जेस तो एमते में ड्रॉ करि परिबा नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपोर्टेंट कोन दीजी ना द रिलेटिव क्लोजनेस of the lines of force gives a measure of the strength of electric field in any region the lines of force are close together in a strong field and they are far apart in a weak field तार मीनिंग कौन देख आम इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को देखिकी केमती कहि परिबा जे वेदर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए स्ट्रांग फील्ड और वीक फील्ड आम जेम जानि छे कोन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हे पारे कि वीक हे पारे जदि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग थिबो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज मोर और जदि इलेक्ट्रिक फील्ड वीक थिबो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज लेस तो आम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखि केमती कहि परिबा जे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग अछि कि वीक अछि प्रेटी सिंपल मन रख सपोज एठी मु दुटा एमती डायग्राम ड्रॉ करूची एटा होची गोटे एग्जांपल दोची एमतिया दिस इज वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एमती अछि एंड दिस इज द सेकंड टाइप सो इफ यू कंपेयर दिस टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स तम देखि परथबो जे फर्स्ट डायग्राम रे कोन होची द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज वेरी स्मॉल मैं कहि परिबा जे द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर क्लोज टू ईच अदर दे आर क्लोजली स्पेस्ड but at the same time look at the second diagram the gap between the electric field lines is more so they are far apart from each other तो जोठी देखिबो जे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टा क्लोज थिबे सेटा होची स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड आउ जोठी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुडी को फार अपार्ट थिबे बा ताको भितर गैप अधिक थिबो ताको हम कहबा वीक इलेक्ट्रिक फील्ड so the relative closeness between the electric field lines that represents the strength of electric field whether the electric field is strong or weak you can determine by looking at the closeness of the electric field line okay next property kon dechi the lines of force do not pass through a conductor because the electric field inside a conductor is zero तो मन रख गोटे कंडक्टर भितर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थाए आ जेहेतु इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो ता भितर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन केबे भी आसीबो नाही बुझि पालो आ काहे कि जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड से हमें पर केबे डिस्कस करिया कि फॉर नाउ रिमेंबर दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर
बा इनसाइड ए मेटल इज 0 आ जदि गोटे रीजन रे इलेक्ट्रिक फील्ड नाही ता माने देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन so electric field lines never pass through or they don't exist inside a conductor or inside a metal so these are the 9 important properties of electric field lines आउ ए सब प्रॉपर्टी को नेकी भी किछि किछि शॉर्ट क्वेश्चंस आसी पर एग्जाम रे तो एबे हमें नेक्स्ट कोन देखिबा जेत हम एबे सब प्रॉपर्टी पढि सारले एबे हमें डिस्कस करिबा बा हमें ड्रॉ करिबा द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज सिस्टम्स तो आम अलरेडी ड्र कर देचे सपोज मुझे कहबी ये गोटे सिंगल पॉजिटिव चार्ज अच्छी तो सिंगल पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस केमती आसीबो लाइक दिस आको में कहबा रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड ता माने द पॉजिटिव चार्ज इज एट द सेंटर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे आर एक्टिंग अलोंग द रेडियस ठीक अच्छे तो एरो मार्क में बाहर को दबा बिकॉज वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज तो ढा होची गोटे सिंगल पॉजिटिव चार्ज पे एमती आसबे इलेक्ट्रिक फील्ड जदि गोटे सिंगल नेगेटिव चार्ज थिबो केमती आसबे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लाइक दिस सेमती हमें रेडियली ड्रॉ करिबा बट इनवर्ड द एरो मार्क विल बी इनवर्ड बट टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज तो एटा होची गोटे सिंगल नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ठीक अच्छे आपको हमें कहबा रेडियली आउटवर्ड and this one is radially inward आ जदि क्वेश्चन आस्थिबो जे ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल तो डाइपोल माने कोन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ता माने गोटे पॉजिटिव चार्ज थिबो गोटे नेगेटिव चार्ज थिबो तो एबे पॉजिटिव आउ नेगेटिव चार्ज थिले कोन हबो ना द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज सो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी लाइक दिस ठीक अच्छे सो यू कैन ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लाइक दिस एडा प्रत्येक बही रे ए सब इलेक्ट्रिक फील्ड डायग्राम अच्छी तो यू कैन follow those books suppose we have two like charges suppose we have two positive charges तो कौन हम जेमती मु कहितली they will exert lateral pressure on each other तो हम एमती डायग्राम ड्रा कर दबा so they will expand or they will go away from each other एटा होची longitudinal contraction and एटा होची नंबर 4 होची कोन lateral repulsion तो हम एमती सब डायग्राम ड्रा कर दबा to represent the electric field lines due to two similar charges बा like charges next देखिबा नंबर 5 कोन आसीबो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अछि ताको हम केमति शो करिबा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रा मीनिंग कोन ना सबु पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड रा वैल्यू सेम थिबो आ डायरेक्शन भी सेम थिबो तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम केमति शो करिबा by using parallel and equispaced lines of force जेतु स्पेसिंग इक्वल अछि ता माने कोन इलेक्ट्रिक फील्ड रो वैल्यू बा तार मैग्नीट्यूड इक्वल अछि एंड दे आर पैरेलल एरो मार्क जो अछि दे आर इन द सेम डायरेक्शन ता माने द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो सेम ठीक अछि एंड जदि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थिबो तो सेटा एमती आसी पारे देखो एटा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई भी कोन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं आम जो गोटे चार्ज रु आवे जाऊे तो कौन हो इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू कमी कमी जाऊँगी ठीक अच्छे तो यहाँ हूँ सब बेसिक टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड सपोज गोटे क्वेश्चन पचार थी एमती गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्र कराई एठी गोटे पॉइंट अच्छी बी एठी गोटे पॉइंट अच्छी ए तो को पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक अच्छी तो आम आराम से कहि परिबा जे पॉइंट बी रे इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक कहीं ना पॉइंट बी रे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कराई दे आर क्लोज इच अदर बट पॉइंट ए रे कौन होची द गैप द सेपरेशन इज मोर तो आम ये कहि परिबा जे ई ए इज लेस देन ई बी ई ए इज लेस देन ई बी सेमती जदि गोटे पॉजिटिव चार्ज रॉड अच्छी तो पॉजिटिव चार्ज रॉड पाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस केमती आसीबो
आउ ये जीव आउटवर्ड जीव तो मन रखता आम जमी पढ़ते जे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज आउटवर्ड बा अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज तो आम एमती ड्र कर जब गोटे पॉजिटिव चार्ज रड अच्छी सो दिस विल बी द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स सो स्टूडेंट्स आज हमें बेसिकली डिस्कस कले जे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कौन तार एक्चुअल मीनिंग कौन आउ तार यूजफुलनेस कौन बा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रू आमे कौन कौन सब इनफॉरमेशन पाई परिबा तो बेसिकली मन रख जे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होची माने गोटे टूल जहाँ को यूज करके आमे इलेक्ट्रिक फील्ड रो नेचर को स्टडी करि परिबा एंड आमे नौटा प्रॉपर्टी डिस्कस कले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रो सब प्रॉपर्टी को मैं एक्सप्लेन कली एंड नेक्स्ट आमे ड्रॉ कले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज बॉडीज देखो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज डाइपोल टू पॉजिटिव चार्जेस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये सब डिफरेंट टाइप रो इलेक्ट्रिक फील्ड पाई आमे जो डायग्राम ड्रॉ करूचे दे आर डिफरेंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमको हेल्प करिवो टू स्टडी द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड किए प्रोड्यूस करुच्ची गोटे पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करुच्ची ना गोटे नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करुच्ची ना गोटे डाइपोल प्रोड्यूस करुच्ची ना आउ किए प्रोड्यूस करुच्ची तो एबे तमे बुझी पारुथिबो जे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रो इंपोर्टेंस ता कोन सो आज क्लास रे जहाँ डिस्कस कले से इंपोर्टेंट टॉपिक माने इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन आसपे all these 9 points 9 properties so try to remember all these 9 properties one by one एथरू 1 mark क्वेश्चन आसपे and किछि किछि conceptual question भी आसपे so I hope that all of you have understood about this electric field lines but still if you have any kind of doubt you can ask me in the comment section so आमे next class रे पुन देखा गोटे नुआ टॉपिक सहित so till then have a nice day and bye bye